आप सबका इस सत्र में स्वागत है। लंच के बाद का सेशन है, थोड़ा नींद वींद रोक के रखिए, पानी वानी पीना हो पी लीजिए। तो सेशन का एक भाग अगर हम देखेंगे तो पहले माने कल एक हुआ था एरिया बेस्ड प्लानिंग को लेकर। तो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट कुड बी द स्कोप ऑफ एरिया बेस्ड प्लानिंग, और उसके कई आयामों पे कल बात हुआ, लेकिन टॉपिक काफ़ी बड़ा है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट how can we reimagine the building blocks of area based planning and in the current realities। तो आज का जो हमारा पैनल है ये वो लोग हैं जो आज इस समय भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरीके से एरिया बेस्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करने की अपने अपने क्षेत्र में। और मैं पैनलिस्ट को एक छोटा सा माइनर एक इंट्रोडक्शन दूंगा। We have Ms. Aruna Pandey. She heads the research and MEL and capacity building at Bharat Rural Livelihood Foundation, which is also working with a cluster facilitation team kind of approach in a Jivida Hasa program and otherwise also. Yeah, so we can learn a lot from her as to how she make it functional. Then we have Rajesh Mitt from Pradhan, who has extensively worked on with SHG institutions and NRM and value chains. But besides that, he has also been working constantly with the MG and REGA program and trying to bring an area lens into that. He was part of conceptualizing cluster facilitation team idea with MG and REGA, and has been trying again to revive it with different state departments. We have Mr. Abhi Tamim Vanak. He is director at Center for Policy Design, ATRI, Bangalore. And sorry. Okay, sorry. And he has been working on the idea of landscape restoration, especially for open and natural ecosystems, and the idea of a specific planning for buffer zones that has been part of consortium approach, I think, which we call ARREST, and we would like to know more about that, the lessons from that. And then we have Raghunathan Narayanan, founder and chief mentor at Prati. And he will be helping us to understand what can be the pathways for financing of landscape level actions or supporting area based planning. Yeah. And we have our session moderator Shri Sudarshan Iyengar sir, who is currently chairperson of Foundation for Ecological Security, and also has been former vice chancellor of Gujarat Vidyapeeth, and you have already listened to him many a time. Thanks a lot sir, for agreeing for moderating and chairing the session. I now give it to you. Thank you. Thank you, Vishal. Please keep it. Welcome to this small group. We hope we will have more discussions. Some points yesterday, all of you were not here in the previous session. I just wanted to know who were there. Aap the, Aruna Bain the. Aap bhi the? So okay, so all for okay. Why I said this was some of these points, actually I will just read out the sort of query or inquiry or discussion we wanted around in this session was, see, the central point is that with the kind of climate change and all, this question has come up afresh. In yesterday's session, we had discussed that we started with drought-prone areas programs, then drought mitigation, then watershed development program, and all that in some sense was restoring ecological balance only. Even in the DPAP program, the main objective was restoring ecological balance.
Uh, so yesterday I mentioned that I started working for the Central DPAP Division Government of India in a district project on an experiment. So concerns have been there right from those days. Somehow we still are stuck with similar kind of problems. So the listed points were bridging individual oriented planning and finance flows with area based planning, framework for promoting interdepartmental and interagency coordination and convergence, locating institutional apparatus from panchayats upwards to align aerological context with administrative hierarchies, bringing of bringing out possibilities from landscape financing policy government, mapping current program scheme to align with agroecology based planning and implementation, building agenda for collaborative action for area based planning. Now a lot of things have been also discussed across yesterday and today in quite a few sessions. So we will have to carefully delineate today our in this session. Say for instance, we already discussed framework to promote or problems in promoting interdepartmental and interagency coordination and convergence. Yesterday, Singh Saab is here, so he can, if we miss something, he can again guide us. This we have actually discussed. Now, our issue is one, that how do we relate whatever we see at that level with the actually agroecological areas, and how do we really integrate all this into the set of individual financial flows, area based efforts of the state and society, and under TSP, tribal sub-plan, or panchayats, or even now the CSR. So all this comes together to us. So our thing is that how do we all recognize that the time has now come? Because we traveled from this. We had these area programs running up to 1982, and in 1982 it was suddenly replaced by IRDP. सिंह साहब आपको याद होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो उसको तो हमने भैंस बांधो कार्यक्रम कर दिया कि सबको बैंक पुजारी साहब थे, लोन मेले लगवा दिए. So we went through all that. Individual beneficiaries became suddenly important, and then area was neglected. अब भैंस तो दे दी पर घास नहीं थी. So these kind of things happened, and they explain everything where we got really stuck. तो अब जो है हमारा फिर से हम कह रहे हैं कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो हैं उसको क्या हम समझ सकते हैं, अपने गांव को, अपने पंचायत को उसमें प्लेस कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर वहाँ पर अभी जो इसके पहले जो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म की जो सेशन चली कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, इसमें सरकारी लोग कितने हैं, बिन सरकारी लोग कितने हैं. हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको अभी पकड़नी है. तो मैंने सोचा कि पहले शुरुआत एक हमारे प्रोफेसर नारायण नहीं है, वो बम्बई IIT में है, तो आज सितारा गुम है हमारे बीच से, क्योंकि वो उसका जो सेंटर का नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म सितारा होता है, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और समथिंग. तो सितारे नहीं है, तो अब हम शुरू तो करेंगे आपसे अरुणा जी. कारण है कि रिसर्च क्या कह रही है, और उसके बाद हम जाएंगे पॉलिसी वाले क्या सोचते हैं, और उसके बाद हम आएंगे कि काम करने वाले का जो अनुभव है वो क्या हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने ये भी भिड़े हैं, ये भी दोनों काम करने के लिए ग्राउंड पे भिड़े हुए हैं. सो ये सीक्वेंस ऐसा रहेगा. तो ये जो मुख्य जो हमने कहा कि खास तो आप इस पर आपकी क्या सोच बनी आउट ऑफ रिसर्च कि ये जो सारी हमारी एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्कीम्स, एरिया बेस्ड स्कीम्स, और वो एरिया कोटर्मिनस है एग्रो इकोलॉजी के साथ नहीं है, क्या क्या हो रहा है दरअसल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है.
और मैं जो बैठा हूँ गांव में, तो मुझे तो अलग अलग विभाग वाले आकर के अलग अलग चीज़ें बोल जाते हैं कि तुम हमारे लिए कर दो, तुम हमारे लिए कर दो। तो उसकी क्या समझ बन रही है, पंचायत की क्या समझ बन रही है, या फिर हम लोग ग्राम सभा के अंदर ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो ये स्कीम्स आ रही हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ जोड़नी है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। आई विश दैट वी स्टार्ट दैट इनिशिएट डिस्कशन एंड देन वी ओपन इट अप। तो आप 5-7 मिनट में अपनी बात रखिए, इसलिए कि ये सेशन में कम से कम हम ओपन हाउस ज़्यादा रखें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। First of all, thank you for giving us the opportunity to come and speak of our work at BRLF, and really happy to be part of a panel in which a lot of friends from past work are part of it. So, quickly sharing the work that has happened at BRLF in the last 10 years. And this is part of our consolidation and learning that we have been doing. When we look at the individual-based benefit schemes that the government has, particularly in the domain of RD, Manrega does feature as one of the largest schemes when it comes to allocations. And the question on whether area-based planning is amenable to the individual benefit schemes, the architecture of individual benefit schemes, I think it's a negotiation that we have been grappling with, wherein it doesn't fit perfectly into the picture, but all of us have been trying to create solution mechanisms wherein one can negotiate, how do we look at individual benefits in the context of area-based planning, and that's where most of our lessons come from. And I'll take example of Manrega and the implementation, which in fact Sir also referred to yesterday in case of Chhattisgarh. But particularly, one wanted to talk about the experience of Jharkhand and Jivida Hasha project, and from there, how has the learning then multiplied into other states where BRLF is active. So 3 key components in the interest of time. The first one being an architecture of interventions that we've been talking about. And that's really critical when it comes to implementing something like Manrega. The focus of BRLF has been that if we are not able to do watershed in its true sense, which is what the panel yesterday discussed, that it's very difficult to actually look at and implement the watershed approach completely when it comes to Manrega and its implementation. Particularly, one of the core reasons being that the watershed boundaries and the panchayat boundaries don't align. And so when we are talking about geographies wherein the administrative planning is shaped very differently from the ecological boundaries, then how do we draw a negotiation between these two pieces? And what we have ended up doing, it's not a perfect thing to do, but what we have ended up doing and how we are negotiating is, and learning, is that we have looked at Gram Panchayat as a microshed, imaginary microshed boundary. And the reason I say imaginary because it's not really in pure ecological terms a microshed, micro watershed. So if we look at that as a planning unit, then the intention is that if we have to plan for that area, then what are the parameters that we must consider so that we are able to do justice to the equity for environment, equity for socio-economic justice, and as well as looking at livelihoods approach, which is sustainable in nature. So starting from that premise, one of the first things that we do is that the Gram Panchayat, the capacities of Gram Panchayat needs to be enabled. The PIA, which is meant for Manrega, has to have the capacity to understand what is the watershed approach and what are the key principles that one must look at, to be even able to have a conversation as to why do we need to pick up the ridge areas first and not the lowland first. So having that conversation with the panchayat, with the institutions, CBOs present in the community becomes critical for us.
We do the planning process of the interventions in the form of a GIS-enabled planning process, which is almost like a perspective plan. This plan is not meant for a year of Manrega's implementation. It is an area plan which is relevant for 5 or 6 years of implementation in the panchayat, looking at angles of ecology and livelihood. And if that is planned through the PRA techniques, but also we bring in something called EPRA, which is GIS enabled, wherein the community members, panchayat members actually look at GIS maps, overlay it with the cadastral map, and then plan for drainage line treatments or the kind of structures which are needed in different parts of the panchayat and the village. Once this is done, then from that list of schemes which have been identified through the applying of watershed principles, what we do is create a priority plan which is needed for that year's implementation. And this is done in the Gram Sabha in consultation with the community members, wherein 3 key principles are looked at. One of them being ecological sense, which is ridge to valley approach, which means that we will pick up areas which are meant for upland treatment first. The second approach which is taken is commons. So we give priority to the commons in the panchayat, work that needs to happen on it. And the third being, during the PRA exercise, community members identify which are the poorest of the poor households through the wealth ranking exercise. So we prioritize, together with the Gram Sabha. The intention is that through the PR exercise, we have identified, and when I say we, it's the community and the facilitation team, has identified poorest of the poor, and those are the people whose schemes should be given priority. And so each year, the priority plans are basically approved by the Gram Sabha. ग्राम सभा में पारित होने के बाद ही वो फिर ब्लॉक लेवल पे एंट्री होती है और उसके बाद वहाँ से उसका अप्रूवल मैकेनिज्म चलना शुरू होता है. So you have a different set of schemes for individual poorest of the poor, or it is the same part of the same larger Manrega. Part of the larger Manrega plan, but within that, the individual land areas which have been planned on. Yeah. So commons come first, and then the next is the individual land areas which are of poorest of the poor. So that process is followed through a community consultation process, wherein the Gram Sabha itself is taking those calls, and the reason they are able to take those calls now, because the capacity building exercise has happened prior to all of this. So from the Panchayat Mukhya to the Rozgar Sahayaks, the maids in the area, the CRPs of the CSOs, facilitation teams of the CSOs, all have been trained on 5 key areas. Them being the first one being watershed approach, the principles, the SOP, for planning for watershed-based approach in Manrega, which is a 5-day residential training, very intensive. The second being livelihood layering on top of Manrega assets, because just talking about creation of assets builds no value, which is what we have been talking about since yesterday. And so how do we talk about layering of livelihoods on top of these assets? Third being GIS. So the Rozgar Sahayak, the Mahila Maid, who's part of Jivida Hasha project, is actually trained in being able to look at GIS maps, make sense of it, and then plan the process with it. And thirdly, we are looking at ODK-based planning, and this is basically a mobile app facilitated planning, wherein data comes and is collected by the CRPs, facilitated by the maids, and then that enters the system when it comes to the planning for schemes. So all these trainings happen prior to the planning process, and they are handheld during the planning process,
so that some of these, just the nomenclature of structures, to have a conversation with the mate, and she remembering what are the different kinds of structures and schemes which are relevant for upland, midland, lowland. That knowledge itself is of immense value. So that's the process that happens in the architecture of interventions. I will quickly talk about architecture of institutions, which is overlaid on the interventions, and that becomes critical when it comes to convergence with different departments. The challenge is that the coordination committees which are created under Manrega are mostly non-functional or do not do the work that they're supposed to be doing in terms of convergence, and the reason being it's very difficult to do convergence which is top-down. And hence, the kind of structures that gets created. To give you an example, the Jivida Hasha project was actually a cabinet-adopted project by the state government. So the state government cabinet actually approved Jivida Hasha project and its implementation. So there's a project steering group which is led by the Manrega commissioner, but has representatives from all departments, starting from agriculture to pisciculture, fisheries, horticulture. So there are about 12 departments which are part of this project steering group at the state level. And a lot of the convergence work that happens is the demand that comes from the ground. So the Mahila mates who are part of Manrega planning, post that, the CRPs work very closely with them in terms of understanding what are the needs for livelihood schemes, which can be overlaid on existing assets that have been created under Manrega. And once that happens, when the requirements from there comes, then that gets tabled, first of all, at the block level, then at the district level, and then it comes to the state steering group. Many a times what happens is once this demand is visible, from the lower levels, the project steering group starts issuing orders, without which the district and the block level machinery does not really move. So there are departmental orders every now and then, which are released from the state level. And the whole coordination between these steering committees at all three levels is anchored by something called the State Project Management Unit. Is you are talking about example from a state, or this is uniform? This is across the states that BRLF has been working. Jivida Hasha is particularly a good example because that's where our planning architecture got more intensified. Our first project was in West Bengal back in 2017, which was the Ushan Mukti project, where we had 7 CSOs coming together. The SPMU, which is the State Project Management Unit that I just referred to, was anchored by Pradhan. The model got a lot of acceptance in the central government. And so there were state governments of Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, and Madhya Pradesh who invited us to start similar initiatives. Also the Bodoland territorial region. Yeah. Yeah, thanks. Thanks for having me on this panel. So, just sort of listening to the discussions that were had in the first session of this, and sort of the broad theme that's emerging now. It seems to me that the idea of area-based planning is occurring at multiple scales. While there's lots of players on the ground, obviously, institutions such as the ones on this panel, but also the ones that were represented more broadly in this convening itself, are doing a lot of work on the ground. There is sort of a scale mismatch between what the different governments' arms want to do, what the voices, and I think you said it, or somebody else said it. Yes, I think Dr. Singh sir said it. Yes, the feedback from the bottom. We are reporting up, not down.
So the feedback from the ground that comes up does not necessarily mesh with what's coming up on top. So now I'll give you a couple of examples of this. We know that, for example, just Narega itself, the natural resources management component of that from, I think, about 2016 to 2022 is about 26,000 crores of funds that were allocated for that from Narega itself. In addition to that, different line ministries, so for example, Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development, Animal Husbandry, you know, all the usual suspects in this case, had their own schemes for natural resource management. But they, and again, this is something that's come across, is that they all work independently of each other. And often they work at odds with each other. The other thing that you mentioned, and this sort of is a theme that keeps coming up here, is about ecology. And I, as the ecologist, wearing my ecologist hat, what we're seeing actually is the understanding of ecology also is a little outdated now when we are thinking about land-based planning. We continue to think of ecology in terms of greening. We talked about ecological balance, but some of those concepts have sort of, have been thrown by the wayside, because we are now looking at dynamic changes that are happening to our environments very rapidly, and we're also ignoring, you said micro watershed, for instance, and you said rich to valley, and yet the interventions that are planned sort of tend to be similar. We do the same, for example, different when it comes to soil and water. Yesterday we had the joint secretary here for the soil and, from rural development. Watershed development. What is the activities that are taken up in watershed development? Trenching and bunding, tree plantation programs. Why? Do we know that they work? Have we done the baseline studies there? To understand, is it required? Or are we just doing it as a rote thing? What worked in the Himalayas or what was required in the Himalayas post-British, when the British left, after having denuded the slopes. Then you had high rainfall areas, you had high rates of soil erosion, are not required in semi-arid areas where you have barely 500% of rainfall. You don't have high slope. So you don't need extensive trenching bunding. Specific, localized actions relevant to that geography. You mentioned agroecological zones, but there's also biogeographic zones. Those need to be developed for each of those landscapes. That actually is a good point. What you are saying is that the policies now at that level, at the macro level, has to be revisited, and we need to learn today. And that, I think, is also the impact of the climate change that we are trying to bring in as a variable. Absolutely. Which is very important. So we really have, and there has to be a kind of a paradigm shift in understanding what was ecological balance then, and what kind of ecological understanding we need to evolve, and the interventions to be designed. That's a very good point. Yeah, absolutely. Another sort of quick point here to make is that there are good examples of convergence that have happened. The government has also come in. For example, the Mishti scheme. They incorporated Narega into the mangrove restoration. And a lot is talked about mangrove restoration as a great sort of scheme, and it is a very good scheme. But let's not forget, mangroves represent 0.05% of India's landmass. So while the government did focus on a neglected ecosystem, the actual impact of that is minuscule compared with, say, a open natural ecosystem, which covers about 10 to 15% of India's landmass, and which supports huge, in fact, our milk and meat economy is essentially supported by our grasslands and commons, and yet we do not have a focus on that. Instead, we continue to have a piecemeal approach to this sort of very broad geography,
without sort of coordinating between the different players. So I'll leave it at this for now, and then I'm sure we'll have some cross questions. Raghunath, you will be able to. Okay. Side plan. So thank you all. So already some of the points covered by Aruna ji from BRLF, and whatever she shared actually post CFT period. So in Jharkhand, she has talked about Jharkhand, and I'll be also talking about Jharkhand, but how things evolved, so that history I can share with you, and along with some learnings and also policy inputs, those things that happened during that time. So it was year back to 2014 when Government of India, Ministry of Rural Development launched one cluster facilitation team strategy in 10 states, basically to help Gram Panchayat through providing technical supports, and also to facilitate community, build their creating awareness, and also building their knowledge to prepare a quality and proper plan and execution that under Manrega. So that was the, and by doing that, the objective was to, and this was actually pilot project. This was actually NRLM MGNRGS convergence pilot project for 3 years, and along with that, the other objective was to create large-scale durable livelihood assets, as well as restore ecology in various geography of the country. So, and now coming back to Jharkhand. So in Jharkhand, the government actually shown interest. Thankfully, the bureaucrats, that time they were there, so who actually shown interest to take it up seriously. And it was taken up in initially 72 blocks, but later on reduced to 64 blocks because of certain issues with CSOs and all. And in 21 districts, so that was there, and 29 CSOs were involved in that. So, the deliverables that put forward by the government was that one is that your preparation of INRM based and watershed approach based plan, NRM plan, across the CFT blocks, and also enhance women participation in the Manrega, and through that also benefiting large number of marginalized community in the area, particularly SC, ST and all these things. So with that deliverables actually, and that time one Jojana Banao Abhijan was introduced, because Jharkhand, in Jharkhand by that time the Gram Panchayat system was not that way very mature. In all respect, fund, functions and functionaries, in all respect it was not that way very grown up. So there was a lesser HR, GP were not opening up, such kind of situation. Job cards were in the hands of middlemen and other people, use of machine, many things were there happening. So when this GO-NGO partnership came through this CFT strategy, so that time this Jojana Banao Abhijan and also Ministry of Rural Development initiated this IPP, intensive participatory planning exercise for preparation of this watershed plan across various states. So that, and government of Jharkhand named it as Jojana Banao Abhijan. So and because many things were not very well defined, so what we did is with government and CSO partners, we prepared this detailed SOPs, standard operating procedure, who will do what CSO will be doing, what government will be doing, what your women SHG view will be doing. So all this is detailed out, and in the planning process, what will be done? I mean, this my previous speaker mentioned that exactly what kind of activities to be taken up.
So for that also we had a detailed exploration कि कौन सा एक्टिविटी कहाँ पे अक्रॉस स्टेट में सूटेबल है और वो बहुत इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं कम्युनिटी को, साथ ही साथ इकोलॉजी को रेस्टोरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो उस तरह का जो मॉडल्स वहाँ पे अवेलेबल था उसको आइडेंटिफाई करके उसी के अराउंड में ही प्लान बनाने के लिए अक्रॉस स्टेट, दैट वाज द काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिल्ट अप एंड फॉर दैट डिटेल्ड प्रोसेस वाज डिलिनिएटेड. Social map, I don't get into all these things, social map preparation to resource map preparation, and then the problem identification and patch-wise visit with the community, identification, generate options, find out the right option. So following the entire process, the plan were prepared. Initially it was thought that कि GP level में प्लान होना चाहिए, but later on we realized that कि एक एक गांव में अगर डिटेल में प्लान नहीं होता है तो उसका असर अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए we did kind of every village का पूरा डिटेल्ड प्लानिंग प्रोसेस फॉलो किया गया था। एंड that was the first time, फर्स्ट एवर मनरेगा में इस तरह से झारखंड में एक डिटेल प्लानिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था। पहले जैसा होता था कि जो मनरेगा में, उसका पहले भी मनरेगा का काम होता था, तो जिसमें कि आपका all kind of concrete works like road, culverts, buildings and big ponds, इसका ऊपर ही एम्फोसिस था एंड उसी को ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। बट दिस टाइम थ्रू दिस प्रोसेस IBA प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ सच, जिससे बोल रहे थे माय प्रीवियस स्पीकर की, जो ऐसा करके उसको अच्छे से एक समझ बना करके करना चाहिए। बट टू द ग्रेट एक्सटेंट आई वुड से कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्लोप है वहाँ पे जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन 7 में ही आता है, जहाँ पे कि आपका रेनफॉल काफ़ी हाई है 1300 to 1500 मिलीमीटर, एंड जहाँ पे कि अनडुलेटिंग टोपोग्राफी है, हिलॉक्स है, फॉरेस्ट है, एंड देन तो बट वहाँ पे इस तरह से कोई वाटर हार्वेस्टिंग का मेजर्स वहाँ पे नहीं लिया गया है। तो उस तरह का कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का प्लान जो है अपलैंड में एक तरह का जो लार्ज स्केल में प्लांटेशन, एग्रो हॉर्टिकल्चर, टिम्बर प्लांटेशन से लेकर के वेरियस काइंड ऑफ अलोंग विद सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स जो अप्रोप्रिएट फॉर दैट स्लोप एंड सॉइल टेक्सचर जो अप्रोप्रिएट है, उनके उस तरह का एक्टिविटी को प्लान किया गया था। फॉलोड बाय जो मीडियम लो लैंड है और लो लैंड है, उसमें वेरियस साइजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, फार्म पॉन्ड्स जो वहाँ पे लोकली नोन एज डोभा, इस तरह से वहाँ पे प्लान किया गया था। एंड देन इन द लो लैंड एरिया वहाँ पे सीपेज टैंक इस तरह का प्लान किया गया था। तो एंड अलोंग विद दैट योर कैटल सेट्स एंड नादेब कंपोस्ट पीट, ऑल दिस थिंग्स आर प्लान्ड एंड जिसमें कि एंड देन प्लान तो हो गया, अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सो देयर वाज अ स्ट्रगल बिकॉज इसमें पॉलिसी चेंज नहीं बोलेंगे बट गाइडलाइन में तो चेंज हुआ है। एक तो है कि जो पहले क्या होता था, जो मिडिल मैन थे उन लोग ही मनरेगा मेट का काम करते थे एंड दे प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि उनका पर सब कुछ है। वो लेबर को मोबिलाइज करेंगे, वो मास्टरल भरेंगे, वो एक्टिविटी को देखेंगे कि हो रहा है ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, वो अटेंडेंस, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस पर्सन मनरेगा मेट, तो जो कि मिडिलमैन करता था। तो उसमें काफ़ी सारे एनोमलीज होता था। तो देन वी एज अ CSO मैंने 29 CSOs केम टुगेदर एंड वी गेव कॉन्फिडेंस टू द स्टेट सेइंग दैट कि आप इसमें बदलाव लाइए, नहीं तो जितना भी अच्छा प्लान कर दें ग्राउंड में अच्छा काम नहीं होने वाला है। कुछ होगा बट लार्जली नहीं होगा। सो इफ़ यू एग्री विथ अस तो देन इसको आप वुमेन मेट में कन्वर्ट कीजिए। जो ज़्यादातर मेल था, ऑलमोस्ट 100% मेल था, उसको आप वुमेन मेट कीजिए। तो इनिशियली विथ लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशन, आई रियली थैंकफुल टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड द कमिश्नर दैट टाइम। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग CFT वाला ब्लॉक से इसको शुरू कीजिए, आपका अगर सक्सेस हुआ तभी जाके हम लोग इसको एक्रोस्टेट करेंगे। तो देन वी टुक इट अप एंड वी ऑल CSO पार्टनर्स गॉट एंगेज्ड विथ VO, SHG, दे आइडेंटिफाइड वुमेन एंड देन ग्राम सभा में उसको बैठ के उसको उन्होंने पारित किया एंड देन वो ग्राम पंचायत में दे करके एंड ऑल काइंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग दैट डिड बाय योर CFT CSOs, we all did that. And then 2 minutes सर, हाँ, सो ये एक हुआ। तो उसके बाद उन्होंने इसका सक्सेस को देखते हुए पहले 50% वुमेन मेट का एक सर्कुलर इशू किया। उसके बाद जा करके नेक्स्ट जो कमिश्नर आए, इसका सक्सेस को देखते हुए 100% वुमेन मेट का अक्रॉस स्टेट उन्होंने इशू किया। साथ ही साथ वहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लार्ज स्केल में अभी एग्रो हॉर्टिकल्चर का पैच क्रिएट हुआ है थ्रू मनरेगा, जो कि पहले ये होता था
कि मनरेगा में एक प्लांटेशन होता है, मतलब हर एक साल खाली आपका ईयर बदलता है और स्कीम वही रह जाता है, हर एक साल प्लांटेशन होता है। लेकिन उससे बाहर निकल करके लार्ज स्केल में इस तरह से करके एग्रो प्लांटेशन एस्टेब्लिश हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस जियो एनजीओ पार्टनरशिप and PRI CBO collaboration. So Geo NGO partnership and PRI CBO collaboration is very kind of critical for large scale such impact in the state. और 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे, इसका ये CFT झारखंड में मोर देन 4 years कंटिन्यू किया, कोई भी स्टेट में नहीं हुआ है एक्सेप्ट झारखंड। एंड देन हम लोग ने इंटरेस्टेड थे इसको आगे ले जाने के लिए, तो उसके बाद सेक्रेटरी का विजिट हुआ एंड देन we advocated for this and then CFP actually followed up action for this. CFP was conceived out of these CFT experiences. I'll talk about that more if time permits. Thank you. Thank you. Thank you very much. So my name is Raghunathan. I'm quite not so much expert in commons side. So coming from a livelihood background, working quite a bit on the markets and finance and how that can help in sustainable development. So my experience has been, so what I want to bring in here is about how do we finance area-based planning. The experience goes back to 13 different types of vulnerable populations whom we have worked with over a period of time, us including like us as organization and partners. This includes small and marginal farmers, female sex workers, transgender, marine fisher folk, tribal population, etc. So I just want to give us background is that in each of those places, there is clearly individual benefit, and they are part of the community, and the larger one is they are part of a larger ecosystem. So it's kind of individual, community, and the ecosystem operates irrespective of the kind of vulnerable population there. In a transgender, interestingly, there is something called a guru as a system. In smaller marginal farmer, there is another system. So in all these cases, there are 3 levels of those systems. So we're trying to bring in this a kind of individual benefits and the ecosystem benefits in this context. So that's how the idea is about how do we finance this. So I come from a larger idea of we can create an area-based plan with certain process, etc. I think extensively all of you talked about it. So how do we finance this? So I'm trying to sort of use it in the commons space. We're a part of the common ground in a market working group, trying to find how do we sort of bring in finance. So certainly in landscape financing, there are 3 things for which certainly money is required. One is for the natural resource based livelihoods where money is needed. So various types of livelihoods, it could be for value chains. We had an NTFE session just before this. It requires entrepreneurial kind of capital, working capital, then for various investments, logistics, etc. The second one is for the restoration of the landscape, and third is about regeneration of that. This includes even the way sustainable harvesting happens, etc. So the 3 types of outcomes for which financing is required. Our imagination is that as we move forward, we look at 5 major pillars of financing. One, I think all of you substantially talked about the public financing. The MGNRGA plays a very important role. There is also other schemes and departments and schemes which can be shaped in. But I want to talk about the other 4. One is about many of these landscape economy is dependent on the value chains. So how the products, the NTFE is a major product, there is also a basket of agriculture products which are emerging from there. So how the value chains themselves can bring in more finance. Can the product pricing, can the way the value chains are built, the way the relationship happens between the collectors and the traders to the markets, can it start bringing in money into regeneration and restoration of the livelihoods apart from the spot prices which market looks at. So that's one way in which we can continuously bring in the market money back into the system for landscape financing. The second part is about the ESG. We talked about there are 1,000 odd companies which need to be bringing in ESG reporting, and also it's a compliance requirement, regulatory requirements, in which can we look at the money coming from the markets through various means, either as a sponsor of social and governance and environmental outcomes, or they buy in some of the outcomes which are coming in from there. So the markets for buying those. So the ESG as a second big private financing opportunity. The third is about the carbon and biodiversity markets. So again, those provide a huge opportunity in terms of what is if you are conserving, you're also preserving, you're also regenerating. What are the opportunities to be in the carbon and the biodiversity markets? You've got few number of projects which are running in. The most important thing is that in those projects is the community stewardship is incorporated there, right? Is this benefit actually coming into communities?
is the governance of that particular institution. If it gets into those contracts, long-term contracts, the governance lies with the community. That is very important, but that provides the third financing opportunity. And the fourth one is the catalytic financing, which has been now talked about quite a bit, including the social stock exchange. These are the new kind of facilities available, even the blended financing coming from the various corporate foundations and also CSR, etc. Can we also look at those opportunities to bring in? So the overall area-based financing, the needs are different. Public financing is one part of it, how that can be shaped, how can be made work on the ground, but there can also be these four opportunities for financing. So just go slightly deeper into how do we make it work. I think there are, to me, I think there are 8 interconnected building blocks, the building blocks for how to make it work. I'll not go into the details. If it's about some of the things which Arunaji talked about, the intervention architecture, institutional architecture, and similar to that, how do we make sure that there is also a framework and the data around it, there is a process and participation around it, and there's a governance and distribution around it. There are about 8 interconnected building blocks, and every term you get into the market in terms of financing will go back to the design table and say that, can we go back and say that is the community at the center, is the money going back, does it require any changes? Yeah. I just pause here that this will certainly require a scale which you talked about, different requirements require different scale. So is there a Gram Panchayat is the only one, or do we need, for a value chain you may need a cluster level, or something else you may need a forest level, etc. So defining that boundary and creating a institutional mechanism in this governance and the production related institutions come together is extremely important. Yeah, I just pause here. Scale. I think very succinctly panelists have shared, and now if all that has gone in our head, अगर ये बात हमारी समझ में आ गई कि क्या क्या चर्चाएं हुई, बात ये हो रही थी कि क्या हम मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो परिवेश है, उस जगहों पर सरकारी योजनाओं से और अन्य योजनाओं से जो बदलाव आ रहे हैं, या जहां हमको अपनी पानी, मिट्टी और जंगल का स्वास्थ्य फिर से लाना है, और साथ में हम लोगों को अपना जीवन भी चलाना है, जीविका भी चलानी है, और जीविका अच्छे से चलानी है, उसको ले करके सरकारी, गैर सरकारी समझ, विज्ञान की समझ, पैसे की समझ, प्रशासन की समझ, इन सारी समझ पे थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हुई हैं। अब जो आपके अनुभव हैं वो साझा कीजिए कि क्या हमारे केंद्र में होना क्या चाहिए, जहां हम हैं उस प्राकृतिक परिवेश में कुदरत और हमारा क्या आपस में रिश्ता होना चाहिए, जब बिगड़ रहा है तो उसको कैसे सुधारना है, हम बिगड़ रहे हैं तो कैसे सुधरें, कुदरत में मुश्किल हो रही है तो उसको कैसे सुधारें। कुल मिला करके ग्राउंड लेवल पे हमको ये समझना है, जहां हम गांव में हैं, कि इन सब बातों में हम सबका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है। तो इस पर ये खुला है फोरम। और एक और भी बात अच्छी आई जो झारखंड को लेकर के आई कि जब तक, मतलब ये हम लोगों को लेकर के है कि जहाँ व्यक्ति हैं, मतलब जहाँ आबादी है, उस आबादी में ईमानदारी से काम करने की नौबत तभी आती है जब आप जो है सरकारी पैसे को खर्च करने के लिए समझ के अनुसार, जो गांव लेवल पे जो समझ बनी है, जो आयोजन हुआ है, जो योजना बनी है, उसके अमलीकरण के लिए, उस योजना को नीचे चलाने के लिए जहाँ जहाँ बहनें आईं, तो एक अनुभव झारखंड का मजबूत हुआ कि वहाँ पर ईमानदारी से काम हुआ है। तो ये एक और डायमेंशन जो है वो राजेश बाहर लेकर के आए हैं। इतनी सारी बात हमारे पास है, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। ईशानी माइक पर। एक्चुअली मैं आपके मत से सहमत हूँ, और उसमें हमें भी ऐसे लगता है कि जो
हम बहुत बार ऐसा होता है कि एक पूरे स्टेट में या पूरे क्या बोलते हैं कि तालुका या जिला में ऐसा होता है कि हर एक लैंडस्केप के लिए अलग अलग मतलब वो इकोलॉजी के अनुसार अलग अलग प्लानिंग नहीं होता है, तो वो प्लानिंग एक जैसे ही होता है और उसको एक क्या बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोलॉजी या वहाँ का जो बेसलाइन सर्वे है, वो बेसलाइन सर्वे क्या चीज़ के अनुसार होता है, कौन करता है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज भी इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि जो भी बेसलाइन सर्वेज होते हैं तो वो आउटसाइडर्स वहाँ पे आके वहाँ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बिल्कुल भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो उसमें वो ट्रेडिशनल नॉलेज अप्लाई होके फिर वो अगर एक प्लानिंग जो बनता है और तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब प्लानिंग के आधार पे जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो वो ज़्यादा मायने में एक अच्छी तरीके से हो सकता है। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें ग्राम सभा शब्द का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, लेकिन उससे बहुत सही समझ बनती नहीं है। उसका कारण ये है कि भारत सरकार ने 73rd अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके अनुसार पंचायत राज कानून में जो सुधार करने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए हैं। जो 73rd अमेंडमेंट की अनुसार हमारी कल्पना है ग्राम सभा की, वो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव बेसिक यूनिट वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज मेल एंड फीमेल कैन सिट टुगेदर and without representative they can discuss and make decision। तो पंचायत की जो ग्राम सभा है जिसको आज कानून से मान्यता है वो बहुत बड़ी होती है और उसमें कई बार तो कई गांव होते हैं। तो वो जो कम्युनिटी की सहभागिता की बात हम लोग कर रहे हैं वो उस पंचायत की ग्राम सभा में नहीं हो सकता। इस चीज को समझते हुए हम लोगों को पंचायत राज कानून के अंदर भी ये सुधार करना चाहिए, और कुछ कानून है कि जिसमें ये हुआ है। FRA एक ऐसा कानून है जिसमें पहली बार भारत सरकार ने ये कहा कि जो सामुदायिक वन अधिकार है उसका क्लेम पंचायत नहीं, एक छोटा रेवेन्यू विलेज या छोटा हैमलेट या टोला पाड़ा भी कर सकता है। और महाराष्ट्र में तो उससे आगे जाके अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो ये ग्राम सभा है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की मान्यता जिसको मिली है, उसको मनरेगा में प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में भी महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता दी है। तो एक मौका बन रहा है कि जहाँ पे वही ग्राम सभा जो CFR की ग्राम सभा है, वही ग्राम सभा मनरेगा की भी ग्राम सभा होगी, और वही ग्राम सभा बेसिक यूनिट के रूप में इसका प्लानिंग भी करेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी। तो ये अभी प्रयोग ड्यू है, लेकिन सरकार की एक कमी होती है कि अच्छे निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उसको करने के लिए बाद में जो सहकारी उसके निर्णय होने चाहिए और योजना होनी चाहिए, उसके अभाव में वो अमल नहीं होता है। उदाहरण के लिए मनरेगा को उन्होंने प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी CFR की ग्राम सभा को बना दिया। महाराष्ट्र में और एक अच्छा निर्णय हुआ है कि तालुका कन्वर्जेंस कमेटी बना दी है, जिस कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं उसमें सारे विभागों की ब्लॉक लेवल की एक कमेटी है जिसके प्रेसिडेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट के होते हैं, क्योंकि ये FRA से संबंधित है। तो उनको भी जोड़ दिया और उनको कहा कि आपको काम करना है, लेकिन उनको पता ही नहीं काम क्या करना है और कैसे करना है। तो उसका जो प्रशिक्षण होना चाहिए उसके लिए कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि ये जो CFR की लेवल की असली ग्राम सभाएं हैं उसके कम्युनिटी के लोग अपनी महिलाओं में से, पुरुष में से ऐसे युवक युवतियों को चुन कर दे जिनका ऐसा प्रशिक्षण हो कि वो रिच टू वैली मनरेगा में जो काम उनको प्लान करना है उसकी समझ उनकी बने, एक्सपर्ट के साथ फील्ड में जाकर उनका ट्रेनिंग हो और वो अपना प्लान बनाए जिसको मनरेगा में मान्यता हो, तब जाके ये काम आगे बढ़ सकता है। अब ये जो गांव के लेवल से ऊपर की रचना की बात है, आर्किटेक्ट की बात आप करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बुनियाद ही अगर मजबूत नहीं होगी तो ऊपर का टिकेगा नहीं। लेकिन बुनियाद में अगर असली ग्राम सभा हो जाए तो फिर उसके ऊपर कैसे जाएंगे,
तो हमारे गढ़चिरौली के आदिवासी इलाके में गांव के ऊपर होता है एक इलाका जिसमें 20-30 गांव के ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि बैठते हैं ट्रेडिशनली। तो उस यूनिट को पकड़ना चाहिए। हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल यूनिट होता है। ब्लॉक ये उसके बाद वाला यूनिट है। तो गांव के बाद इलाका, इलाके के बाद ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट। इस तरह की अगर रचना हम लोग करते हैं तो वो प्रत्यक्ष में काम कर पाएगी, ऐसा हमारा अनुभव है। आपने बिल्कुल सही बात बोला कि अगर पंचायत राज सिस्टम में अगर नीचे स्तर पे अगर ठीक ठाक से चीज़ें नहीं होगी तो ऊपर में कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छा, ये मेरी आवाज़ जा रही है? आ रही है। ओके, सो एंड आप जैसे झारखंड में ये तो 5th शेड्यूल एरिया है, पेशा एरिया है, बट स्टिल उसको अभी तक लागू नहीं किया गया था। मैं अभी झारखंड में नहीं हूँ, अभी पता नहीं कि लागू हुआ कि नहीं, बट तब तक लागू नहीं हुआ था, नहीं हुआ है। हाँ, झारखंड से तो बोल रहे हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जिसके चलते जो आपने बहुत अच्छे से बोला है कि जो ट्रेडिशनल जो विलेज बॉडी है वो कैसे करके अपना गांव का प्लान अपना स्तर पे फाइनल करे और उसका एग्जीक्यूशन हो। तो लेकिन मनरेगा में यहाँ पे हम लोग उस टाइम सोचे थे जो ग्राम सभा का पहले जो टोला सभा या पाड़ा सभा जो हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे एसएचजी वीओ मिल करके पहले वहीं से प्लान शुरू होगी। तो यही उसमें एनविसाइज किया गया था कि पहले हो गया कि आपका टोला सभा, उसके बाद वहाँ का प्लान ले करके जो एसएचजी को जो वीओ है वो भी लेके जाएगी ग्राम सभा में और वहाँ पे जा करके उसको पास कराएगी। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं और खास करके जो मार्जिनलाइज फैमिलीज है अदरवाइज छूट जाते हैं, ग्राम सभा में बहुत कम जाते हैं। आई फुल्ली एग्री एंड अप्रिशिएट योर पॉइंट सर, वो बिल्कुल जाते नहीं है वो ग्राम सभा में, अपना चीज़ को रख ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कम से कम जब टोला सभा होता है वो टोला सभा में इन लोग को बुलाया जाता है और उसके लिए एसएचजी वीओ को ही जिम्मेदारी दिया गया था। उन्होंने बुला करके उसके साथ बैठ करके प्लान किया है और वही प्लान फिर उन लोग ले करके ग्राम सभा में गया है। तो ये प्रोसेस को वहाँ पे फॉलो किया गया था। मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बात हम समझ लें, ये जब भी हम अभी ये भार हमने दिया कि लोगों की भागीदारी और लोगों की भागीदारी के लिए संस्था का स्वरूप, इस पर हम जोर दे रहे हैं। अभी भाई ने एक पॉइंट उठाया था कि ये अब रिच टू वैली में भी क्या समझना है, उसमें बहुत परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो जो मुद्दा निकल के आ रहा है, जो अभी ये 10 मिनट में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, पर जो परिवर्तन जलवायु के हिसाब से हो रहे हैं उसमें हर एक स्तर पर, चाहे देश हो, राज्य हो, जिला हो, तालुका हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, टोला हो, इलाका हो, गांव हो और गांव के मोहल्ले हो, भाई हो, बहन हो, एक समझ साझा है कि ये समस्या है और इस समस्या पे काम करना है। ये पहली शर्त है। हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि सबको क्लाइमेट चेंज एक तरीके से समझ में आ रहा है और सबका हित जो है इसको ठीक करने में ही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि अगर टोले की दरखास्त को ग्राम सभा कहे कि नहीं इसमें तो हमारा हित नहीं है, तो उस समय जो संघर्ष खड़ा होगा, उस संघर्ष के निवारण की कौन से नियम होंगे, ये हम लोग ग्रामदान के अंदर थोड़ी इसकी ज़्यादा लंबी चर्चा करेंगे। पर मूल मुद्दा ये है, क्योंकि हम वापस ये जो सारा सत्र है इस पर ध्यान लगा रहा है कि किस तरह से हम एग्रो इकोलॉजी यूनिट को जो है वो सेंटर में लाएं और ये एक शेयर्ड विजन होना चाहिए। अगर इसको हम शेयर्ड विजन मानेंगे तो उसकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो हैं उसके आसपास बनेंगी, फाइनेंस उसके आसपास जुटेंगे। आप दोनों अपनी फाइनल कमेंट्स दीजिएगा, उसके बाद तब तक मुझे लगता है कि चाय बन गई होगी। सॉरी, एक बात में हम आपसे भी फीडबैक लेना चाहते हैं कि आप वहाँ जरूर एक हो जाए, ले लेंगे, 5 मिनट आगे चले जाएंगे, चाय कम समय में पी लेंगे। जी, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ
आपके विचार से जो आपने कहा था कि लोकल जो वहाँ के कम्युनिटीज़ है उनका ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ होना, इसलिए मैंने कहा ना कि बॉटम अप जो हमको फीडबैक मिलता है उसको, इसलिए कोई भी एरियाज़ में हम एस्पिरेशनल सर्वेस करते हैं, बिकॉज वी कांट अज्यूम कि हमने जो टॉप से प्लानिंग किया था वो लोगों को भी वही चाहिए। एंड तो मैं इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वाटर के बारे में। वाटर लिटरेसी थोड़ी मिक्स्ड है। ऑल ऑफ अस रियलाइज कि वाटर कंजर्वेशन रिक्वायर्ड, हम वाटर स्कीम्स मतलब कि इतने सारे जितने भी स्कीम्स है वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन वगैरह बहुत सारे, सो अपस्ट्रीम प्लानिंग वी डू, बट डाउनस्ट्रीम यूटिलाइजेशन उसका फिर पूरा हम एंड द प्रॉब्लम इज दैट अगेन द प्लानिंग यूनिट्स आर वेरी डिफरेंट. We have an entire area, this entire conversation about area-based planning, etc. is about trying to save or trying to improve. Even in that, say for example, we are doing tree plantations. Tree plantations in dry areas is not a good idea because it will reduce water. It will not increase water, it will reduce water. Even if you save water, your industries, the ministries and the departments that are promoting industries are then promoting industries that use more water or promoting crops that require more. So for example, sugarcane. Or this morning there was a conversation, one of the gentlemen said, basmati rice production units are coming up in somewhere. So that's leading to fertilizer overuse, pesticide overuse and water extraction. We have schemes promoting groundwater extraction. Our groundwater extraction levels are completely unsustainable. They're completely mismatched with our rainfall regimes. So the planning again, and I come back to this of scale mismatch. What we are doing at local levels, area levels, we are very forward thinking. But when it comes from grander schemes, even market, I wanted to say, here Samaj is proposing and Bazaar is disposing. Because it's completely skewed priorities there. We want to maximize profits, we want to maximize private equity and income generating opportunities. But the resource base that's based on is out of sync with all of that. And the point that you wanted me to talk about a little bit more is the climate change angle. We are simply not factoring in the variation that's going to come due to climate change. Currently, Rajasthan is experiencing floods. Many parts of Rajasthan, they're all experiencing once in 100-year floods. Agriculture systems are going to get disrupted there. Other places have experienced severe droughts. Last year we went through a massive drought in lots. So, and not just that, the timing of rainfall is changing everywhere. When people are, absolutely, everything is changing. But we are still sticking with our old systems because that's what we know. So that needs to change. We have to really update ourselves. I'd just like to add 2 points. Okay. One is on, we spoke about the architecture of institutions. There, when it comes to village level planning and the bodies that are required to be empowered at that state, one of the key roles that we have also experienced, which is over and above the current Manrega structure, is Jharkhand has, speaking of qualitative research, Jharkhand has come up with a model, the CSOs which are working with BRLF, altogether 11 CSOs. 3 of them are experimenting with something called the Mates Forum, which is a critical institution at the ground level, which facilitates the Tola level planning together with the VOs, and equipped with the technical knowledge of what does it mean to plan with a certain approach to understanding ecology and the local needs which are there of people. They have played a very fantastic role, along with being a support system for each other. Because Mahila mates are crossing gender boundaries, where a lot of corruption, a lot of contracting, a lot of politics
around how resources get allocated, the challenging those systems. So providing that support system has really been critical, and that forum both at the village, panchayat and the block level. It's a loose organizational structure which has come up, recognized by the BDO and the district level officials. So that's absolutely critical to look at ways of enabling ground up planning. In fact, one of the first things that we ask when we do a baseline is Gram Sabha kitna regular hoti hai? Kaun usme aata hai? That's the starting question with which we move into an area. The second thing which is critical is in terms of understanding, because BRLF works largely in the tribal geographies, there is a need to look at agriculture, the planning of assets, and CFR together. And once we do that, then the success of whatever we do in terms of planning, either for Manrega or other departments, have really been successful. So, I'll stop at that. Yeah, thank you. आपका एक सवाल था. जी धन्यवाद. मेरा नाम केशव गुंडले है. मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आया हूँ संस्था से. जो अभी मोहन भाई ने और इधर चर्चा से जो बात आई है कि नरेगा जैसे मतलब नरेगा के उसके फाइनेंस और इसमें जो है अंतिम निर्णय जो होता है एक लेवल पे ग्राम सभा का, और ख़ासतौर पे CFR ग्राम सभा के अंदर में. लेकिन ये सारी ग्राम सभाएं अकेले हो जाती है कि सरकारी सिस्टम में भी उसको इतना माना तत्वतः मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में उसको बगल में रखते हैं. तो हमारे यहाँ हम लोगों ने उसका CFR ग्राम सभाओं का एक महाग्राम सभा हमारे यहाँ की ग्राम सभाएं ने बनाए हैं. इसमें सारे होता है डिसीजंस के लिए ग्राम सभा होता है और सपोर्टिंग के लिए महाग्राम सभा होती है. सारा तेंदुपत्ता बांस ये जो सब बेचने का होता है, मतलब मुझे ये बढ़ा के नहीं बताना है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए का 10-10, 15-15 करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट केवल ग्राम सभाओं के साथ होता है, जो कि हमारी सरकारी सिस्टम ने कभी कभी हम पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे जाके कर देते और फिर नीचे हो जाता है. तो ये हमारा जो भी डायलॉग है, जो भी काम है, वो हर इंडिविजुअल ग्राम सभाओं के साथ होना बहुत जरूरी है, जब उनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है और बढ़ेगी भी. और अभी फाइनेंस के लेवल में उनके तरफ हम कभी कभी देखिए अडानी है, मतलब ये उतना पढ़े लिखे नहीं है तो पैसा संभाल पाएंगे, ऐसा मुद्दा हमारे अनुभव में तो ऐसा नहीं कि ये सब भी हो सकता है. और अभी ये सारी चीज़ें हैं कि पैन कार्ड है, GST है, टैन है, रिटर्न है, ये सारी चीज़ें ये लोग भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं जी. तो वो उस तरह से जाने की जरूरत है. Hello. You spoke about area-based planning, but I wanted to understand whether this planning is of activities or of results. Because most of the times, we tend to do a lot of planning of the activities without realizing what the results are going to be. And sometimes the results are not the results which we actually want to see on the ground. So that's my question. तुमने नया सत्र का टॉपिक दे दिया. सर आप कहिए. सिंह साहब क्या बोलो, अभी जो बात कर रहे थे कि बहुत सारा हम लोग इकोलॉजी को ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं. मुझे लगता है एक अगर प्रिंसिपल अगर लगाएं हम कि इको रेस्टोरेशन का अप्रोच जो है कि हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी साइकिल और वाटर साइकिल को हम कैसे वापस करें. लेकिन हो क्या रहा है, एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा आपको. जैसे अभी सॉइल हेल्थ कार्ड बना है, 12 चीज़ मेजर करते हैं, उसमें pH है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, NPK और बोरॉन, आयरन, 12 एलिमेंट है. कुछ भी घटा तो आप क्या डालेंगे, फिर से केमिकल. तो सवाल है कि आप वर्चुअली कॉर्पोरेट को हेल्प कर रहा है आपका पूरा डिज़ाइन जो है न्यूट्रिएंट साइकिल को, क्योंकि वो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो अर्थवर्म है, वो वापस लाओगे और वो अभी नहीं आएगा कि आपने इतना पेस्ट डाल रखा है. तो जैसे कोई भी इंट्रोडक्शन करते हैं तो रहवास उसके लायक बनाएंगे आप. तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप जो बाजार सरकार दोनों मिलके आप उसका लैंड खराब कर रहे हो और लगातार के लिए फ्यूचर के लिए भी खराब कर रहे हो. तो वो हम अगर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को सही समझ के काम करेंगे
तो शायद एरिया को लेके उतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि एरिया तो इशू बेस्ड होगा। बायोफिजिकल स्पेस, कल्चरल, कभी जैसे प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे आप तो मार्केट और कितना प्रोसेसिंग के लिए वॉल्यूम चाहिए उसके हिसाब से होगा, तो वो इशू बेस्ड होगा और बहुत तरीके के होंगे। और वो चीज़ जो है, दूसरा आपके एक फाइनेंस के बारे में कहना चाहूँगा कि मलेशिया में देखिए अभी ESG को लेके MSME को भी कर दिया। हमारे यहाँ 1000 के जो कैपिटलाइजेशन के ऊपर, क्यों भाई? इसको लेके जोरदार समझ होनी चाहिए कि जहाँ से आप रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए आप भी जिम्मेदारी लो, रिसोर्स की और ESG को मैंडेटरी जो है सबके लिए होना। और तीसरी पॉइंट जो कहना चाहूँगा कि कल से हम लोग साइलोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, वहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेवल है उसके लिए अलग से तो बना नहीं है, तो हम हमारा स्ट्रक्चर ही साइलोज के लिए का, तो जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिए कहना चाहिए कि नहीं, यहाँ ग्रुप आके काम करेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट गई कि अब ये डिपार्टमेंट मिल के प्लान बनाएंगे, वहाँ नहीं, कम से कम रूरल डेवलपमेंट है, आप कम से NRLM और NREGA और दीनदयाल वो तो एक साथ बनाओ ना। मतलब जो साइलोज विद इन मिनिस्ट्री है पहले उसको कन्वर्ज करो, फिर एक सिमिलर टाइप का लाइवलीहुड का एक प्लान होगा, इतने मिल के बनाएंगे। तो ऊपर भी बदलाव की जरूरत है और नीचे भी बदलाव की जरूरत है, और दोनों साइड से जब होगा, और इसमें बहुत सारे पॉलिसी के इश्यूज हैं जिसको केयरफुली सोचना पड़ेगा, तभी जो है समाज के हिसाब से सरकार और बाजार चलेगी। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार भी बाजार के हिसाब से ही चल रही है। और ये बहुत आपसे सुन के अच्छा लग रहा है। Soma, that will be your last comment. Everybody is waiting for tea. Okay, please. Just to bring the women into the room. हमने राजेश प्रयास किया है कि PVTG ग्रुप्स के साथ खास करके, क्योंकि उनके जो हैबिटेट राइट्स की बात है वो कहीं नहीं आती है, तो हमने प्रयास किया है कि जहाँ पे हम उनके साथ ये बात करें, एरिया प्लानिंग की बात ना करें, उनकी क्या मूल्य और क्या आवश्यकता है उसको लेकर शुरुआत करें, और उनके समूहों में टोला वाइज, टोले भी नहीं होते, कई बार 3-4 परिवार ही साथ रहते हैं, तो उसकी प्लानिंग करते हुए क्या चीज़ है, कौन सा मूल्य है जो वो अपने लिए कायम रखना चाहते हैं। सो द कॉन्वर्सेशन इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, क्या चीज़ है जो कायम रखना चाहते हैं, कौन सी ज़रूरत है जो पूरा करना चाहते हैं। सो वी आर यूजिंग सुमी कृष्णा's जेंडरस्केप्स फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई नीड्स। तो वर्डस्केप्स और वर्कस्केप्स, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस काम के लिए और क्या दिक्कतें आती हैं, उसको हम परिभाषित करते हैं, और फिर कि हम किससे क्या काम ले सकते हैं, so that there is an intersection of the silos and there is a need redressal। तो उन्होंने पहली बार एंटाइटलमेंट्स की बात को ही छेड़ा कि हाँ, जो दिख रहा है, जो सरकार का तंत्र, समाज सरकार से बात करे, और फिर बाजार तो हमारे बीच आ ही रहा है खुद ही, हम आ नहीं जा रहे, लेकिन वो हमारे हड़प रहा है अगर संसाधन, तो सरकार को हमारे पक्ष से कैसे हम उसके साथ बात करने के लिए लाएं, नेगोशिएशन की प्रक्रिया को मजबूत करें हम कैसे। तो एंटाइटलमेंट्स, टाइटल एंड क्लेम्स, एंड देन हैबिटेट राइट्स की चर्चा छेड़े। कहाँ से ये हैबिटेट की चर्चा छेड़े, क्योंकि ये सरकार नहीं कर रही, मार्केट तो उसको नहीं छेड़ना चाहती, समाज के लिए ज़रूरत है। So that's where we've started. I just wanted to end with a small solution point. हाँ, नहीं सही है, मतलब ये तो हम करेंगे ही, क्योंकि दरअसल ये सत्र जो है, वैसे हम भले आज सरकार, बाजार और समाज की बात कर रहे हैं, पर हम लोग ये फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, और उसके लिए किस तरह का आयोजन साझा करेंगे, और वो प्रक्रिया जो है उसके लिए जो संस्थाएं बनानी हैं वो कहाँ से शुरू होके उसमें उसकी भागीदारी में कौन होने चाहिए, कौन होंगे। मुझे लगता है कि ये सवाल हैं, पर इन सवालों के लिए मैंने जैसे कहा कि एक साझा समझ, कि हम सब समझ रहे हैं कि हमारे पास जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं,
वो व्यक्ति और हमारी संस्थाएं इनको लेकर के भी हैं, और जो ऊपर से प्रकृति के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भी है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत संकुल स्थिति है, कोई बहुत आसान स्थिति नहीं है। पर जब हम कॉमन्स को लेकर के ये, क्योंकि हमारा एजेंडा एक ये है कि क्या हमारी दृष्टि में मूलतः हम प्राइवेट सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अटैक कर सकते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशन अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, इसीलिए अब इस इंस्टीट्यूशन पर भी सवाल कीजिए कि भाई कहाँ तक प्राइवेट रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा, कहाँ ये एरिया जो है लोगों का हो जाएगा। ये हमको बेसिकली ये डिस्कशन में भी लाना है। यहाँ समाप्त करते हैं। ये एक जगह ऐसी जगह बैठ गए हैं जहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, भाई दो उनको। हाँ, मैं जवाहरलाल माथुर झारखंड से हूँ और हम कोल्हान एरिया से बिलोंग करता हूँ। और हमारा जैसे ही वहाँ बारिश होता है, क्योंकि हमारा सिर पर बारिश होता है, सीधा तुरंत जा कर के नीचे में आ जाता है। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अभी जैसे हमारा वाटर लेवल बहुत ही नीचे आ गया, क्योंकि अभी इतना सारे चापाकल वगैरह बन गया और उसमें पानी, हम लोग जो चापाकल पहले लगे थे उसमें बहुत ज़्यादा सूख गया है। और हमारे जितना भी संसाधन था वहाँ स्प्रिंकलर सेट बोलिए, चाहे हमारा पुराना तालाब है, वो सब भी मतलब अभी सूख रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम एक ही कम शब्द में बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे पास में जितना बारिश हुआ, 1400 मिलीमीटर लगभग बारिश हो रहा है, तो इसको हम बहुत कम पैसा में हम चाह रहे हैं कि बालूबंद के माध्यम से हम अगर इसको हमारा स्प्रिंकलर सेट को हम अगर बचाते हैं और वहाँ से हमारा जो पुराना तालाब है उसको हमारा गाद वगैरह निकाल करके ये करते हैं, तो ऐसे ही हमारा वाटर लेवल ऊंचा आ जाएगा। और हमारा जैसे ही हम रिसाइकलिंग का मतलब ये करेंगे, हमारा पानी को ऊपर चढ़ाएंगे, तो हमारा ऊपर से अगर हम उसको चलने के लिए सिखाएंगे, हमारा बुलान बोल करके बोलते हैं, हमारा जो माझी परगना व्यवस्था है या हमारा मनकी मुंडा व्यवस्था है, हम लोग ने बहुत सब बुलान बना के रखे हैं। बुलान मीन्स मतलब डाइवर्सन चैनल है ना। तो हाँ, तो उससे हमारा जो है नीचे खेत में डायरेक्ट नदी में पानी नहीं जा करके क्या करता था कि वो हमारा डाइवर्सन हो करके ऊपर से पानी चलने के लिए जाता था। तो हमारा जितना भी डोभा और ये सब था, उस सब में पानी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता था, और जिससे हमारा धान का खेती भी नहीं मरता था। और ये और डोबका से हम लोग पहले करते थे, अभी तो थोड़ा सा अभी मशीन भी हो गया, तो उसके साथ साथ लेकिन डीजल का इतना ज़्यादा कीमत हो गया, उसको नहीं ये कर रहा है। उसमें हमारा बाकी समय में अगर बहुत कम खर्चा आ रहा है, तो इसमें हमको सोलर सपोर्ट से अगर रिसाइकलिंग हम करते हैं तो हमारा ये आपका प्लान होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। यही बात हो रही है, ये पूरी चर्चा यही हो रही है कि आप समझ रहे हैं कि स्थिति बदल रही है, स्थिति के अनुसार आप जो कर रहे थे उसमें नई चीज़ आप जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे अगर सोलर एनर्जी मिल जाए तो हम लोग ये अच्छे से कर लेंगे। बात सही है, ठीक। अब यहाँ इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि 3:30 बज गए, हम लोगों ने 15 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं। अब अगले सत्र के लिए भी जाना है चाय पी करके। आप सबका धन्यवाद। ईशान जो है इन लोगों का सम्मान थोड़ा कर ले, तब तक आप रहिएगा, हम सब उसके साक्षी। और आप सबको खाली धन्यवाद। सर फोटो